Probably know for much of this and many of the things that we're doing, especially the AI, they would need actually double the electricity that the country now produces for everything. So it's massive electric, and they're going to be able to make their own, and they're getting very fast approvals. Lee Zeldin is doing a fantastic job, including with a 100% expensing on the one big, beautiful bill. In return, we're asking our businesses to invest in America, and they're coming in at levels that we've never seen before. So I don't know when it shows up, but there are a lot of factories and a lot of plants that are either under construction or soon will be starting construction. So can't tell you exactly when, but I want to be around in about a year from now and 2 years from now, because we're going to see an explosion, I think, like this country has never seen before. Never. Today's announcement is one of the largest commitments in what has become among the greatest investment booms in our nation's history, and we've got the hottest country anywhere in the world. You know, I told you the story that, and Tim, I'll tell you, but I went to the Middle East, and I was with Qatar, I was with UAE, and the King of Saudi Arabia, all great leaders. And then I went to NATO and saw many great leaders, and we just finished that about 4 weeks ago. Everyone, virtually everyone, said, in effect, that we were a dead country 1 year ago. America, this was a dead country. We were dying, we were dead. And now you've got the hottest country anywhere in the world. This would have never happened except for certain people. Thank you very much. I appreciate it. NVIDIA is investing $500 billion to go along with Apple's $600 billion. $600 billion. Micron, great company, is investing $200 billion. IBM is investing more than $150 billion. SoftBank is investing substantially more than $100 billion. TSMC is investing $200 billion. Johnson & Johnson, $55 billion. Merck, Stellantis, and General Motors are putting many, many billions in. They haven't determined the final number. And many other countries are investing tens of billions of dollars that I'm not going to give you the whole list because the list is too long to read. But it's hundreds of billions and even trillions. I mean, it's trillions of dollars that's being invested right now. Last week, it was announced that our economy grew at 3% in the second quarter, and consumer confidence is surging. Blue-collar wages are rising rapidly. Costs are way down. You know, I listen to these horrendous frauds on CNN and various other fake news networks, and they say costs are up. No, costs are down. Gasoline is down. It's going to soon, I believe, be less than $2 a gallon. It's around $2.40 right now. Many places, other than California, where they tax you out of business, but and a couple of others. But gasoline is way down. The price of groceries are down. How about eggs? When I first came here, my first week, the press hit me very hard on eggs. Eggs had quadrupled or something. I said, I didn't know about it. Give me a chance. I've just been here for 4 days. Well, eggs are down. Everything's down. Price is down. The only thing that's up is stock prices. That's really up, and that's through the roof. The stock market has been hitting all-time records, all-time highs. Last week, it was announced that our economy grew at levels that we haven't seen in a long time, but the real levels of growth are going to be judged in a year from now when you start seeing some of these incredible plants, because we have car plants opening. They're coming in from Canada, from Mexico, and from all over the world. And they're coming in because they like the way the election worked out, but they also like the fact that they don't want to pay tariffs. And the tariffs, I think, will be we're taking in hundreds of billions of dollars in tariffs. I won't be so specific other than to say, because we don't even know what the final number is. We just made a deal, as you know, with the EU, where they're paying hundreds of billions of dollars. Japan paying hundreds of billions of dollars, and numerous other countries paying hundreds of billions of dollars. And we're not even completed there. And as you know, they found $25 billion 3 weeks ago. They said, we have a surplus of $25 billion. And they said, where did this come from? I said, check the tariffs. And they checked. They said, you're right. That's where it came from. And we've really just started. This is just in its infancy. So we have a great country. We have a country that is going to be very rich. It's a country that we're very proud of, but it's going to be very rich.
And it's companies like Apple, they're coming home. They're all coming home. And we want them to come home. They have to come home. We're going to treat them really well. We're going to be putting a very large tariff on chips and semiconductors. But the good news for companies like Apple is if you're building in the United States or have committed to build, without question committed to build in the United States, there will be no charge. In other words, we're not going to be charging. So a lot of countries, a lot of companies are leaving various other places and they're coming to the United States. So in other words, we'll be putting a tariff on of approximately 100% on chips and semiconductors. But if you're building in the United States of America, there's no charge, even though you're building and you're not producing yet in terms of the big numbers of jobs and all of the things that you're building. If you're building, there will be no charge. So I just want everyone to know that. And I didn't even tell you that inside. We discussed the concept, but I didn't. So it's a big factor. So 100% tariff on all chips and semiconductors coming into the United States. But if you've made a commitment to build, or if you're in the process of building, as many are, there is no tariff. Okay? If for some reason you say you're building and you don't build, then we go back and we add it up, it accumulates, and we charge you at a later date. You have to pay, and that's a guarantee. So that's a big statement, and I think the chip companies are all coming back home. They're all coming back. You know, we started with Intel, and gradually Intel was just taken over the coals. They were taken to the cleaners, frankly, and moved to other places, in particular Taiwan. But I think a lot of those companies are coming back, and they're coming back very rapidly. So that's a big statement. 100% tariff. I want to thank you very much, Tim. Would you like to say a few words about your company, please? It's okay. Good afternoon, everyone. Mr. President, thank you very much for having me here today. You've been a great advocate for American innovation and manufacturing. I'm grateful for your leadership and your commitment. That's a commitment we share at Apple because American innovation is central to everything we do. Our products are designed here, we're hiring and growing here, and we support 450,000 jobs with thousands of suppliers and partners in all 50 states. Earlier this year, we made our largest ever spending commitment, $500 billion to the U.S. over the next 4 years. That's already yielding results. Earlier this year, we broke ground on a new factory in Houston to make advanced AI servers. And just last month, the very first test unit rolled off that factory's line, proudly made in America. President Trump shared some kind words about that work, but he also asked us to think about what more we could commit to doing. And Mr. President, we took that challenge very seriously. I'm glad to be here with you today, and I'm very proud to say that today we're committing an additional $100 billion to the United States, bringing our total U.S. investment to $600 billion over the next 4 years. As a part of this, we're launching Apple's American Manufacturing Program. It will spur even more production right here in America for critical components used in Apple products all around the world. And we're thrilled to announce that we've already signed new agreements with 10 companies across America to do just that. First, with today's announcements, I'm proud to say that Apple is leading the creation of an end-to-end silicon supply chain right here in America, from design to equipment to wafer production to fabrication to packaging. In Texas, we're working with manufacturers like Texas Instruments, Global Wafers America, and Applied Materials. We're working with Amcor in Arizona and Broadcom and Global Foundries in New York. Thanks to President Trump's vision, and with his help in his first term, we also led the way to bring TSMC to Arizona by committing to be their first and largest customer. Today, they're producing tens of millions of chips for Apple using one of the most advanced process technologies in America today.
We're going to keep working with our suppliers to move even more of this incredibly advanced work to America. And this year alone, American manufacturers are on track to make 19 billion chips for Apple in 24 factories across 12 different states. Second, we're committed to buying American-made advanced rare earth magnets developed by MP Materials, which will become part of Apple's devices shipped around the world. MP is the only fully integrated rare earth producer in the United States, and with this partnership, they'll be significantly expanding their flagship facility in Fort Worth, Texas. We're also thrilled to work together on a cutting-edge rare earth recycling line in Mountain Pass, California. And third, in Kentucky, we've worked with our partners at Corning to build the world's largest and most advanced smartphone glass production line. And I'm pleased to announce that very soon, this is for the first time ever, every single new iPhone and every single new Apple Watch sold anywhere in the world will contain cover glass made in Kentucky. In addition to the American manufacturing program, we're also significantly growing our investments in AI, including expanding data center capacity in North Carolina, in Nevada, in Iowa, in Arizona, and Oregon. So we're going to keep making investments right here in America. We're going to keep hiring in America. And we're going to keep building technologies at the heart of our products right here in America. Because we're a proud American company, and we believe deeply in the promise of this great nation. Thank you all, and thank you, President Trump, for putting American innovation and American jobs front and center. Thank you, sir. Great honor. Thank you very much. Thank you. Appreciate it. What a job he's done. What a job. Incredible. I want to thank you very much, and thank you, JD, for helping along. Good job. Really good job. Any questions, please? Mr. President, yes. You promised on the Hill to bring forth a manufacturing renaissance. You just mentioned $17 trillion in your first 7 months or so. Right. Can you talk about how an investment like this, all the other ones that you laid out, will positively impact the millions of Americans that trusted you with their vote? Thank you very much. It changes our country. I mean, our country is a very different country than it was 6 months ago. And people like Tim are coming. We had Micron in yesterday. We had all of the big, great companies that you read about, you don't know about, but you read about. Many of them were making products outside of our country. Foolishly, we lost them. If we had the right person sitting in that seat, that would have never happened 20 and 30 years ago. When you look at the chip business, it would have never left our shores. We had 100% of chips originally, and then we slowly got taken down to nothing. We have the biggest chip companies, both of them, but we have the biggest in the world coming in. They're going to Arizona and beyond. And we're going to have, in a short period of time, we'll be up to almost 50% of the chips from starting in nothing. And that's something. But we have the greatest companies in the world coming into our country, and that means jobs, and it means wealth, and wealth means security for our people. Okay? Brian? Yes, sir. Congratulations on this investment, President Trump. Thank you. Great example of putting America first. What does the labor force look like to fill these jobs that you have? Do we have enough skilled American workers to fill these? Well, we do have a lot of workers, and we have a lot of workers that hadn't been looking for work because they were disincentivized, frankly. And people like Tim have tremendous schools and training centers that they build along with a lot of their big plants where they train people on whether it's glass, like in Kentucky, or computers, or whatever they might be doing. It's a complex world, and they train people, and they do a great job. So it's a whole new workforce. Now, we have a lot of them in energy because, you know, they've always liked energy. As you know, coal has opened up big. We brought it back. And brought it back in a very large way. You know, China's right now building 58 coal-fired plants, 58 big ones. And here we were saying we don't take coal. We have more coal than anybody else in the world. We have more oil and gas than anybody else in the world. But we have tremendous energy jobs, and the energy, as you know, we're booming with energy.
And that's why the gasoline prices are down. The costs are down. I just hope when they watch these shows, I watch this, I won't use names because I just make them better known that nobody knows who they are. But I watch this group of people on CNN and MSDNC too, the same thing, where they say, well, costs have gone up. Costs haven't gone up, they've gone down. I'm telling you, the thing that's gone up is stock prices and success of our country. Our country is really doing well, successful. Yes, ma'am? Yes, Mr. President, have Zelensky agreed to a summit yet? And where and when would that be? Well, there's a very good prospect that they will. And we haven't determined where, but we had some very good talks with President Putin today. And there's a very good chance that we could be ending the end of that road. That road was long and continues to be long, but there's a good chance that there will be a meeting very soon. How close do you think you are to a deal? Excuse me? How close do you think you are to some kind of deal? Well, I don't want to say. I've been disappointed before with this one. You know, we've solved 5 wars, plus add to that Iran, where we wiped out their nuclear capacity for weapons. They would have had a weapon within 2 months, maybe less, and that was totally obliterated. It turned out it was a total obliteration, and the pilots and the people that did that job are really, we have the greatest armed forces in the world, but that was really something. In fact, there's a model of the plane right there. So, you got to bring that up, Susie. We have to see that. Look at this. This was just given to me. You know, we ordered brand new B-2 bombers. This is a plane that over a period of 36 hours of constant flying. Look at this. So this is the brand new one they just ordered. Similar, but actually quite different. It's new and enhanced. It's an amazing machine. It went 36 hours. We had 52 tankers up in the air loading up our planes because this was surrounded by F-22s and F-35s, and it was flawless, Tim. Even you would say it was flawless. And every one of those bombs hit their target. And then we had Tomahawks shot in from a submarine 300 miles away, and they hit every single Tomahawk hit its target. It was amazing. And that was a big threat. That was a nuclear threat. And here's the new one that we just ordered, a large number of them. I'll put it up. Mr. President, what was the breakthrough today? Did Vladimir Putin make some kind of concession that he hasn't been willing to make before? I don't call it a breakthrough. I mean, we've been working on this a long time. There are thousands of young people dying, mostly soldiers, but also, missiles being hit into Kiev and other places. But in terms of soldiers, I think Russia's lost over 20,000 since the beginning of the year. 20,000. And I guess the estimate for Ukraine is about 9,000. It's a terrible situation. We want to get it stopped. We don't have American soldiers there, but I feel I have an obligation to get it stopped. This was not my war. This war would have never started, not even a chance. And it didn't start for 4 years. I went 4 years and didn't start. But this is Biden's war. This was on his watch. And, it's funny, we had no land was taken from Trump. It was taken from Bush. It was taken from Biden. The whole thing they would take from Biden if it weren't for us. But it was taken by Obama. Take a look at what was taken with all of the land that was taken. Nothing was taken by Russia from us. Not 1 ounce of land was taken. I'm here to get the thing over with. It would have never started if I were president, and we're here to get it stopped and get the death stopped. Yeah, please. Mr. President, in the past, you said you would know if he was tackling you along. What gives you any confidence that he is or isn't doing that this time around? Can't answer the question yet. I'll in a matter of weeks, maybe less. But we've made a lot of progress. And as you know, we put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. But so I don't know if that had anything to do with it. But we've had very productive talks today. Yes, ma'am. President Trump, on federalizing D.C., are you considering taking over the D.C. police? Is that an option on the table? We're considering it, yeah, because the crime is ridiculous. I could show you a chart
comparing D.C. to other locations, and you're not going to want to see what it looks like. It was just up on television, actually. They were showing it. Now, we want to have a great, safe capital, and we're going to have it. And that includes cleanliness and it includes other things. We have a capital that's very unsafe. You know, we just almost lost a young man, beautiful, handsome guy that got the hell knocked out of him the night before last. And I'm going to call him now. We wanted to give him a little recovery time. We just put a call into him. They're calling back in a little while, but he went through a bad situation, to put it mildly, and there's too much of it. We're gonna do something about it. So whether you call it federalized or what, and that also includes the graffiti that you see, the papers all over the place, the roads that are in bad shape, the medians that are falling down, the median in between roads that's falling down. We're going to beautify the city. We're going to make it beautiful. And what a shame. The rate of crime, the rate of muggings, killings, and everything else, we're not going to let it. And that includes bringing in the National Guard, maybe very quickly, too. And do you want Congress to look at overturning the D.C. Home Rule Act? We're going to look at that. In fact, the lawyers are already studying it. We have to run D.C. This has to be the best-run place in the country, not the worst-run place in the country. And it has so much potential. And we're going to take care of it. You're going to be safe. You're going to be safe walking down streets. You're not going to get mugged. Mr. President, if you do reach a deal with Ukraine and Russia, would you drop the additional tariffs on India? Well, we'll determine that later. But right now they're paying a 50% tariff. Okay. One for Mr. Cook as well. Yeah, please. Sure. The president wants a made-in-the-USA iPhone. What are the chances that you can actually make that happen? Well, if you look at the bulk of it, we're doing a lot of the semiconductors here. We're doing the glass here. We're doing the Face ID module here. And so there's a ton of it. And we're doing these for products sold elsewhere in the world. And so there's a lot of content in there from the United States. But what about the whole thing? We're very proud of it. Can you make the whole thing is just the final assembly that you're focused on. And that will be elsewhere for a while. He makes many of the components here, and we've been talking about it, and the whole thing is set up at other places, and it's been there for a long time. So in terms of cost and all, but I think we may incentivize him enough that one day he'll be bringing that. But he brings most of the stuff. Look, he's not making this kind of an investment anywhere in the world, not even close. He's coming back. I mean, Apple's coming back to America. Thank you. Mr. President, Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours. So let's see what happens over the next. Sanctions. Yeah, you're going to see a lot more. So this is a taste of You're going to see a lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. You were the driving force behind Operation Warp Speed, these mRNA vaccines that are the gold standard. Right. Now your health secretary is pulling back all the funding for research. He's saying that the risks outweigh the benefits, which puts him at odds with Research the entire medical community and with you. What is going on? Research on what? Into mRNA vaccines. Well, we're going to look at that. We're talking about it, and they're doing a very good job. And, you know, that is a past. Operation Warp Speed was, whether you're Republican or Democrat, considered one of the most incredible things ever done in this country. The efficiency, the way it was done, the distribution, everything about it has been amazing. But, you know, that was now a long time ago. And we're on to other things. But we are speaking about it. We have meetings about it tomorrow at 12 o'clock, and we'll determine. We're looking for other answers to other problems, to other sicknesses and diseases, and I think we're doing really well. Yes, ma'am, please. Thank you, Mr. President. You said many times that you want to stop wars in the Middle East. Now Prime Minister Netanyahu is contemplating reoccupying Gaza entirely. Is he defying you, sir, or are you giving him a green light? Well, we have stopped wars in the Middle East by stopping Iran from having a nuclear weapon, and they're
They can say they're going to start all over again, but that's a very dangerous thing for them to do, because we'll be back. As soon as they start, we'll be back. And I think they understand that. They're just words. But, no, we've stopped a lot of wars in the Middle East. If you think about what we did with Iran was the perpetrator of hate, a very evil place, and I think it's going to be a lot different in the coming years. On the India penalties, do you have any similar plans to enact more tariffs on China as it relates to their purchases? Could happen. Depends on how we do. Could happen. Mr. President, I've got an entertainment-based question for you. A few weeks ago, Stephen Colbert announced that he was leaving his show. Howard Stern announced that him and Sirius XM Radio are parting ways. Do you think the hate Trump business model that's been in the entertainment business is going out of business because it's not popular with the American people? Well, it hasn't worked, and it hasn't worked really for a long time, and I would say pretty much from the beginning. Colbert has no talent. I mean, I could take anybody here. I could go outside in the beautiful streets and pick up a couple of people that do just as well or better. They get higher ratings than he did. He's got no talent. Fallon has no talent. Kimmel has no talent. They're next. They're going to be going. I hear they're going to be going. I don't know, but I would imagine because they get, Colbert has better ratings than Kimmel or Fallon. You know that. Howard Stern is a name I haven't heard. I used to do a show. We used to have fun. But I haven't heard that name in a long time. What happened? He got terminated? Yeah, they're going to separate ways because I think what they're offering salary-wise is real low than what he's getting. You know when he went down? Whenever you want. You know when he went down? No, before. When he endorsed Hillary Clinton, he lost his audience. Right. People said, give me a break. He went down when he endorsed Hillary Clinton. Mr. President, have you talked to Governor Cuomo interviewing Fed candidates yet? Yeah, we've started the interviewing process. Scott and I and Howard, a lot of people, JD, we have some great candidates. It's probably down to 3. He doesn't want the job. He said, do you like this job better? Yes, sir. I mean, he was a candidate, but I don't think he'll take it. I really don't think he'd take it, actually. Are there any candidates from Wall Street, Mr. President? Yeah, essentially we're all from Wall Street, aren't we? You know, when you get right down to it, the term Wall Street. Yeah, please. Yep, you made your tax cuts permanent. You mentioned that the tariffs are bringing in a ton of external revenue. You've opened up markets, the EU, Japan, South Korea, many others, to American goods like we've never seen before. How much growth can we expect in the economy now that this model of yours is sort of beginning to really take off? Well, I think the growth is going to be unprecedented. I think we're going to have growth that's unbelievable. Now, remember, we're building and just starting to build a lot of these incredible plants. We talked about the electric facilities that we're building, the generating plants, electric generating plants. They're massive. And they're going to be great, and they're going to sell excess electricity into our grid. So we're going to be having much more electricity than we ever had, and those plants are going to be taken care of individually. I know Tim is building one in one of his big factories, but especially for AI because it needs so much electricity. So I appreciate the question very much, and I think the growth is going to be unprecedented. Mr. President, did you have a phone call with Andrew Cuomo? Did you speak to Andrew Cuomo? I haven't. No, I haven't. Mr. President, have you been briefed on what Ghislaine Maxwell told Todd Blanche? No, I haven't. Have you not. don't know whether it came up in the conversation? I know Todd is a very respected person all over the country, all over the world legally, so I don't know. Mr. President. Yeah, please, go ahead. Will the new Fed governor be temporary? We're probably going to go with a temp and then a permanent, I think. Are the two... So the temp is going to be named, I'd say, over the next 2-3 days, and then we're going to go permanent. Are the two Kevins the leading contenders for the permanent spot for the chair? Well, the two Kevins? Mm-hmm. The two Kevins are absolutely, yeah. They're both very good. Mr. President. The two Kevins is very good. Mr. President, is Vice President Vance hosting a gathering this evening to talk about how to respond to the Epstein situation? Is he working on what? Is he hosting some kind of gathering of top advisors this evening to talk about how to respond to the Epstein situation? I don't know. I could ask you that question. I don't know of it, but I think here's the man right here. I saw it reported today, and it's completely fake news. We're not meeting to talk about the Epstein situation, and I think the reporter who reported it needs to get better sources. Look, the whole thing is a hoax.
It's put out by the Democrats because we've had the most successful 6 months in the history of our country, and that's just a way of trying to divert into something that's total bullshit. Okay? Yeah, please. A new Gallup poll says that Elon Musk is the most unpopular public figure in the country right now. I'm wondering, do you miss having him around the White House, or is that poll accurate? I don't know if the poll's accurate. I think he's a good person. I think he had a bad moment, really bad moment. But he's a good person. I believe that. President Trump, are you keeping that 10 to 12-day deadline? China is facing potential secondary sanctions for Russian oil. Them having that tariff or sanction rather, or not, hinges on what going forward? It may happen. I mean, I don't know. I can't tell you yet, but we did it with India. We're doing it probably with a couple of others. One of them could be China, yes. Are you keeping that 10 to 12-day deadline that you had given Russia after today's talks? Yeah, we're pretty much getting close to it right now, but we're having very serious talks right now about getting out of Ukraine, getting it settled, getting it ended. Should have never started, would have never started. If I were president, it would have never started. I want to thank Tim Cook. He's a great man, a visionary, a businessman, just about every quality he can have other than athleticism. I don't know about that. I'm looking at him. I'm not 100% sure about you. You're a good athlete. I'll bet you're pretty good. I think he's good at everything, but I want to thank you very much, Tim. Thank you, sir. Congratulations. Thank you all very much. Thank you. Thank you, Chris. Thanks, guys. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ओवल ऑफिस में गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर आप अमेरिका में बनाएंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा। हम चिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे। 1 साल पहले अमेरिका को दिवालिया कहा जा रहा था। आज कई कंपनियां अमेरिका में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रही हैं। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई ममालिक के दौरे किए हैं। नेतन्याहू जंग को मजीद वुसअत देने की तरफ बढ़ रहे हैं। अमरीकी हुक्काम खून रेजी में इजाफे पर फिक्रमंद हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक खुलकर मुखालफत नहीं की और गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप की जानिब से ऐलान करदा नया फूड एड मंसूबा भी अब तक हतमी शक्ल नहीं ले सका है। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ज़राए के मुताबिक स्टीव विटकॉफ पीर को मियामी से वाशिंगटन आए और सदर ट्रंप से डिनर पर मुलाकात की। ये मुलाकात स्टीव विटकॉफ के गुज़िश्ता हफ्ते इसराइल और गजा के दौरे के फौरन बाद हुई। एक अमरीकी ओहदेदार ने बताया कि फैसला किया गया है कि ट्रंप इंतजामिया अब गजा में इंसानी इमदादी सरगर्मियों की निगरानी खुद करेगी, क्योंकि इसराइल इसे मौसर तरीके से नहीं चला रहा। अमरीकी ओहदेदार ने यह वाज़ेह नहीं किया कि अमरीकी किरदार में अमली तौर पर क्या शामिल होगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि खलीजी ममालिक खासतौर पर कतर माली मदद फराहम करेंगे, जबकि उर्दन और मिस्र भी मुमकिन तौर पर इसमें शरीक होंगे। ताहम इसी अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप इस बात से खुश नहीं है कि अमरीका खुद ये जिम्मेदारी संभाले, लेकिन ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा है। जबकि एक दूसरे अमरीकी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया इस बात का खास ख्याल रखेगी कि अमरीका गजा के बहरान में हद से ज्यादा ना उलझ जाए। इस ओहदेदार ने मजीद बताया कि सदर ट्रंप नहीं चाहते कि सिर्फ अमरीका ही इस मसले पर पैसा खर्च करता रहे। ये एक आलमी मसला है। वो स्टीव विटकॉफ और दीगर को यह जिम्मेदारी दे रहे हैं कि वो यकीनी बनाएं कि हमारे यूरोपीय और अरब दोस्त भी इसमें अपना हिस्सा डालें। दूसरी जानिब अमरीकी और इसराइली ओहदेदारों के मुताबिक इसराइल अमरीका के इस बढ़ते हुए किरदार की हिमायत कर रहा है। एक इसराइली ओहदेदार ने तस्दीक की कि अमरीका गजा में इमदाद की सतह बढ़ाने के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदादी कामों में क़यादत का किरदार अदा करेगा। इसराइली ओहदेदार के मुताबिक अमरीका इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाने जा रहा है ताकि इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके, ताकि इस मसले की संगीनी कम हो सके। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि ट्रंप इंतजामिया के कुछ अफराद इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू की जंग को वुसअत देने की तजवीज़ पर तशवीश में मुब्तला हो रहे हैं। एक इसराइली ओहदेदार ने एक्सियोस को बताया कि नेतन्याहू ने यह इम्कान गुज़िश्ता हफ्ते स्टीव विटकॉफ के दौरे के दौरान उठाया था और इस हफ्ते व्हाइट हाउस से भी इस पर बात की है। इसराइली हुक्काम का दावा है कि वो अमरीका के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग हैं। ऐसे में जब इसराइली हुकूमत गजा पर मुकम्मल कब्जे के लिए फौजी कार्रवाइयों को मजीद वुसअत देने के मंसूबे बना रही है, तो वहीं गजा में इसराइली फौज की बमबारी के साथ साथ जमीनी कार्रवाइयाँ भी पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं। जबकि गजा में इसराइली मुहासरे की वजह से ग़िज़ाई क़िल्लत भी बदस्तूर बरकरार है, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 फ़लस्तीनी भूख की वजह से दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद भूख से मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 193 हो गई है। जबकि इसराइली हमलों में आज मजीद 135 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें से 87 को उस वक्त मारा गया जब वो इमदाद के इंतज़ार में खड़े थे। ट्रंप दावे कर रहे हैं अमरीका एक तरफ खड़ा है और इसराइल अपनी ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।
जश्न आज़ादी मरकज़ हक गवर्नर हाउस में 1 अगस्त से जारी और सारी है। रोजाना की बुनियाद पर 7 अगस्त को राहत फ़तेह अली खान गवर्नर हाउस में होंगे और उसके बाद 10 अगस्त को अली जफर हैदराबाद में और 11 अगस्त को आतिफ असलम गवर्नर हाउस सिंध कराची में और 12 को अली जफर कराची गवर्नर हाउस में परफॉर्म करेंगे। मैं आपका मेज़बान अपने सारे मेहमानों का मुंतज़िर रहूंगा। जश्न आज़ादी मरकज़ हक गवर्नर हाउस में 1 अगस्त से जारी और सारी है। रोजाना की बुनियाद पर 7 अगस्त को राहत फ़तेह अली खान गवर्नर हाउस में होंगे और उसके बाद 10 अगस्त को अली जफर हैदराबाद में और 11 अगस्त को आतिफ असलम गवर्नर हाउस सिंध कराची में और 12 को अली जफर कराची गवर्नर हाउस में परफॉर्म करेंगे। मैं आपका मेज़बान अपने सारे मेहमानों का मुंतज़िर रहूंगा। जश्न आज़ादी मरकज़ हक गवर्नर हाउस में 1 अगस्त से जारी और सारी है। रोजाना की बुनियाद पर 7 अगस्त को राहत फ़तेह अली खान गवर्नर हाउस में होंगे और उसके बाद 10 अगस्त को अली जफर हैदराबाद में और 11 अगस्त को आतिफ असलम गवर्नर हाउस सिंध कराची में और 12 को अली जफर कराची गवर्नर हाउस में परफॉर्म करेंगे। मैं आपका मेज़बान अपने सारे मेहमानों का मुंतज़िर रहूंगा। जश्न आज़ादी मरकज़ हक गवर्नर हाउस में 1 अगस्त से जारी और सारी है। रोजाना की बुनियाद पर 7 अगस्त को राहत फ़तेह अली खान गवर्नर हाउस में होंगे और उसके बाद 10 अगस्त को अली जफर हैदराबाद में और 11 अगस्त को आतिफ असलम गवर्नर हाउस सिंध कराची में और 12 को अली जफर कराची गवर्नर हाउस में परफॉर्म करेंगे। मैं आपका मेज़बान बदल रहा है और खबर देने का जाविया भी। हर मौजू हर पहलू पर तबसरा होगा एक नए अंदाज से। पाकिस्तान के सबसे मोतबर और जानदार तबसरा निगारों के साथ हर मामले पर फौरी और हटमी राय। ये है सबसे मुनफरिद रिपोर्ट कार्ड। देखिए रिपोर्ट कार्ड पीर से हफ्ता शाम 7:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। वेलकम टू जियो पाकिस्तान। आपके लिए 23 मार्च पाकिस्तान डे क्या है? हम सबको एहतियात करना बहुत जरूरी है। कल शब देखा मैंने झांझरों के में। लेट अस टॉक अबाउट क्रिकेट भाई। अश्विन जब तू भागता था ना तो हमें लगता था अब कुछ होने वाला, हम दूसरी टीम में बैठे हमें मजा आ रहा होता। हाउ आर यू? बहुत अच्छा। मेमोरी गेम्स और ये होता है। सुपर लर्निंग के 7 कोर्सेज हैं। आप लोगों को स्मार्ट सिटी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। जो आपका सफर है इसे छोड़ना नहीं है, आपने प्रॉमिस करेगा। जी प्रॉमिस। जितनी करप्शन पिछले सालों में थी उतनी ही करप्शन आज तक मौजूद है। ये सारी जो है वो पावर की। मुझे मिसपिक ना समझना। ना का मतलब ना होता है। खर्च किया जाना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। अपने राइट के लिए आप आवाज उठाने के लिए डरे नहीं। और हमारे एक्टर्स बहुत टैलेंटेड हैं। पोटैटो इन उर्दू। आलू। यस। पाकिस्तान इस सिलसिले में क्या करना चाह रहा है? प्यार है, हमें प्यार है पाकिस्तान से। देखिए जियो पाकिस्तान पीर से जुमा सुबह 9:05 सिर्फ जियो न्यूज पर। जीरो कॉम्प्रोमाइज विद जीरो गिल्ट। लाइफ में कुछ चीजें जीरो ही होनी चाहिए। डाइजेस्टिव जीरो शुगर, गिल्ट फ्री डिलिशियसनेस। जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है। लाइफ में कुछ चीजें जीरो ही होनी चाहिए। डाइजेस्टिव जीरो शुगर, गिल्ट फ्री डिलिशियसनेस। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। बिग फ्रीज रियो यमी स्ट्रॉबेरी एंड क्रीमी वनीला की डबल ट्रीट। We put a 50% tariff on India on oil. They're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil.
from Russia. Please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's okay. buying more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. Sanctions. You're going to see a lot more. अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। चीन पर टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। ईरान ने अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। रूसी हुकाम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई है। ये एक अच्छा मौका है। रूसी हुकाम से बहुत जल्द मुलाकात होगी। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे। अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने के फैसले को सराहता हूं। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब उतना आसान नहीं रहा जितना पहले था। भारत पुतिन से तेल खरीदने पर बजिद है ताकि यूक्रेन में खूनरेजी जारी रहे। सदर ट्रंप ने दुनिया पर वाजे कर दिया कि पुतिन से तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। जो इस काम में मुलविस हैं वो अब किसी और के बजाय खुद को मुर्दुल इल्जाम ठहराएं। शाबाश सदर ट्रंप, आप वो मजबूत और फैसला कुन रहनुमा हैं जिसका दुनिया यूक्रेन में खूनरेजी के खात्मे के लिए इंतजार कर रही है। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतकी काम किया। आखिरकार उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेल और गैस खरीद कर पुतिन की शैतानी जंगी मशीन को फंड्स फराहम करते हैं। सवाल किया कि बरतानिया और बाकी यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी पर हमला। आईएसपीआर के मुताबिक दहशतगर्दों ने मस्तोंग में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी को आईईडी से निशाना बनाया। धमाके में मेजर मोहम्मद रिजवान ताहिर समेत 3 फौजी जवान शहीद हो गए। शोहदा में नायक इब्न अमीन और लांस नायक मोहम्मद यूनिस शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेज की क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। आईएसपीआर के मुताबिक मेजर रिजवान शहीद दिलेर अफसर थे। दहशतगर्दी के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मेजर रिजवान शहीद ने हमेशा फ्रंट लाइन से अपने जवानों की क़यादत की। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस बंद। बलूचिस्तान हुकाम का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात पर बंद की गई है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक राब्ता। सालारों को दरपेश मसाइल पर तफसीली बातचीत। फौरी इक़दाम पर जोर। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी का गवर्नर सिंध को टेलीफोन। इंचोली में एहतजाज करने वाले ज़ायरीन से बातचीत की दरखास्त। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक गवर्नर सिंध ने ज़ायरीन से राब्ते और मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर सिंध से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वफ़द की मुलाकात। इंचोली कराची में कई घंटे एहतजाज के बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन मार्च के शुरका हब रिवर रोड की जानिब रवाना हो गए। आज इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज बारिश का इम्कान है। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। रावलपिंडी के इलाके सादिकाबाद हारून चौक पर मेडिकल स्टोर में डकैती। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान लूट मार के बाद फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। रियो में है यमी स्ट्रॉबेरी एंड क्रीमी वनीला के डबल फ्लेवर्स, जिससे मिले लंच टाइम की डबल ट्रीट।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, रूस पर टैरिफ का तयन बाद में करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि चीन पर टैरिफ का ऐलान कर सकते हैं। ईरान ने अगर दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, रूसी हुकाम से बातचीत में खासी पेशरफ्त हुई है, ये एक अच्छा मौका है, रूसी हुकाम से बहुत जल्द मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स की दरामद पर तकरीबन 100% टैरिफ लगाएंगे। We put a 50% tariff on India. On oil, they're the second largest. They're very close to China in terms of the purchase of oil from Russia. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buying okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. You're going to see a lot more, and we haven't determined where, but we had some very good talks with President Putin today, and there's a very good chance that we could be ending the end of that road. That road was long and continues to be long, but there's a good chance that there will be a meeting very soon. सवात मलूकाबाद में जमरुद की कान बैठने का वाकया। रेस्क्यू 1112 ने कामयाब ऑपरेशन के बाद जमरुद की कान में फंसे 4 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया है। मजीद जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज अबू बकर सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबू बकर, बताएगा क्या तफसीलात हैं? देखिए, रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के जो तर्जुमान है बिलाल अहमद फजी, तो उनके मुताबिक रेस्क्यू 1122 ने कामयाब ऑपरेशन के बाद जो है स्वात में का जो इलाका है जरमद, वहां की कान से 4 मजदूरों को जो है वो बाहिफाजत निकाल लिया है। और बिलाल फजी के मुताबिक मजदूरों को तकरीबन 900 फुट की गहराई से जो है वो बाहिफाजत निकाला गया है। उनके मुताबिक रेस्क्यू 1122 की मेडिकल टीमें जो है वो मजदूरों को एम्बुलेंस में फौरी तबी इमदाद जो है वो इस वक्त फराहम कर रही है, और इसके बाद जो करीबी हॉस्पिटल से उनको वहां पर मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक कान बैठने के बाद जो है ऑपरेशन कई घंटों तक जो है वो जारी रहा, जिसमें 40 से ज्यादा एहलकारों ने हिस्सा लिया। और रेस्क्यू ऑपरेशन की क़यादत जो है वो जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर है तो उन्होंने की है। इसी तरह रेस्क्यू 1122 के मुताबिक कामयाब ऑपरेशन पर जो है मकामी लोगों की जानिब से जो है रेस्क्यू की तो जो है वो खुदरा तहसीन भी पेश किया गया, क्योंकि एक तो रात का वक्त था तो काफी हार्डल्स भी रही है इस ऑपरेशन में। और जो रेस्क्यू की टीमें हैं तो उनको भी जो है चूंकि यहाँ पर करीब जो स्टेशन है वहां पर एहलकारों की कमी के बाद करीबी जो स्टेशन है वहां पर भी जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनको तलब किया गया, और काफी टाइम जो है ये ऑपरेशन जारी रहा। और फाइनली जो है रेस्क्यू 1122 जो है वो इस ऑपरेशन में कामयाब हो गई। और रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान ने जो है तस्दीक की है कि 4 मजदूर जो के फंसे हुए थे इस कान में, तो 4 को जो है बेहिफाजत निकाल लिया है। और इस वक्त जो है उनको एम्बुलेंस में तबी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है, जबकि इसके बाद जो है उनको मकामी हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अबू बकर। लाहौर से खबर है, जहां चौंक के इलाके में खावंद के सामने बीवी के गैंग रेप का मामला। सीसीडी मॉडल टाउन का मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कसूर में छापा। कसूर में फायरिंग के तबादले में चौथा मरकजी मुलजिम इमरान हलाक हो गया। सीसीडी के मुताबिक हलाक मुलजिम इमरान ने गैंग रेप की मुकम्मल प्लानिंग की थी। मुकदमे में नामजद 3 मुलजमान अवैस, जाहिद और इरशाद पहले मुकाबले में मारे जा चुके हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए जियो न्यूज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फारूक शेख। गुज़श्ता रोज यानी 5 अगस्त की तारीख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बड़ी जमात, इन्होंने बहुत बड़े बड़े इस तारीख से मुतल्लिक दावे किए थे। ये कहा गया था कि न सिर्फ तहरीक शुरू करने जा रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को छुड़ाने के लिए और जितने असीरान हैं उनकी रिहाई के लिए, बल्कि कहा भी जा रहा था कि जो 5 अगस्त होगा नुक्ता उरूज पर होगी ये अपनी तहरीक। दावा किया गया था। इमरान खान ने ऐलान किया फिर अपनी एक ट्वीट में कि वो जेल से बैठकर खुद इस तहरीक की क़यादत करेंगे। सख्त पैगाम भी दिया अपने कारकुनान को कि जो
ये हिम्मत नहीं रखता कि वो अब सख्ती से बाहर निकले, बिला किसी खौफ, बिला किसी डर के। वो बेशक पार्टी छोड़कर चला जाए, सब निकलना है, लेकिन जो सूरत हाल कल बनी उसके ऊपर अब दो राय पाई जाती है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये मौकिफ लिए हुए है कि कल का एहतजाज बहुत रुकावटें थी, गिरफ्तारियां हुई, बहुत आगे मसले मसाइल थे, लेकिन फिर भी लोग निकले और अच्छी तादाद में निकले। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत जो कि दावा करती है कि कुछ खातिर खा एहतजाज नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना तो लोग बड़ी तादाद में निकले और ना ही एहतजाज में जो नज्म ज़ब्त होना चाहिए या फिर जो अफादियत होना चाहिए, जिस तरह का मौसर एहतजाज होना चाहिए, वो भी नजर नहीं आया। इस चीज को भी डीबंक करते हैं, लेकिन उससे बड़ा ये सवाल है कि अब तीसरा साल होने आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी को कैद में रहते हुए, गिरफ्तार होते हुए, दीगर असीरान भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल कर पाई, और खासकर ये एहतजाज 5 अगस्त का जिससे मुतालिक बहुत बड़े दावे किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उससे क्या हासिल हुआ? हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, सोहेल वड़ायत साहब, शहजाद इकबाल साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, आपसे शुरू करना चाहते हैं, क्या समझते हैं तीसरा साल अब शुरू हो गया खान साहब की कैद को, कल का जो एहतजाज था उससे मुतालिक बहुत सारे दावे किए गए, कामयाब, नाकाम, हिट, मिस, क्या हासिल हुआ पीटीआई को? बहुत शुक्रिया अलीना। हुकूमत अपनी सियासत तो कर सकती है इस बात पे कि एक नाकाम एहतजाज था, लेकिन फ्रैंकली हुकूमत का ये कहना बनता नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को जब आप एक इंतजामी हरकत से रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब कि जो निकले तो 144 लगा दो, FIR कटवा दो, अरेस्ट कर लो। कल भी सुना है पंजाब में कोई 1000 वर्कर्स या सपोर्टर्स या सिंपथाइजर्स जो थे उनके खिलाफ उनको अरेस्ट किया गया, उनके खिलाफ FIRs हुई हैं। तो एक ऐसे माहौल में जब किसी को पता है कि वो बाहर निकलेंगे और अगर उनकी नीयत इंटेंशन ये हो कि मैं एक पूरा मन एहतजाज के लिए निकल रहा हूँ, अपनी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए, और उसका नतीजा ये होगा कि मेरे ऊपर FIR हो जाएगी और मेरा सारा करियर जो है वो तबाह हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है खौफ का आलम तो होता है। तो हुकूमत इसलिए उनका कहना बनता नहीं है, क्योंकि अगर वो एक ओपन फील्ड देते और उस वक्त पीटीआई नाकाम होती लोगों को निकालने में, तो मेरे ख्याल से उनका कहना फिर उस वक्त बनता था। इस वक्त तो जो सख्तियां हैं बिलखसूस पंजाब में, इस्लामाबाद में, वो हम सबके सामने है। यानी कि अडियाला जेल 4-5 लोग जाना चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मजमा है, वो जाने की भी इजाजत नहीं होती। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने कोई बड़ा जबरदस्त काम किया? मेरे ख्याल से गिवन द सिचुएशन उस लिहाज से भी उनकी एफर्ट उस तरह की नजर नहीं आई, और मेरे ख्याल से कोई कामयाब एहतजाज जिसकी वो बात कर रहे थे वो नजर नहीं आया। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक तो मैंने बताया खौफ तो है ही, लेकिन इसके अलावा इस वक्त पार्टी में बड़ी तकसीम है। यानी कि आप देखें जो मरकजी क़यादत है वो सूबाई क़यादत की तरफ देखती है। मरकजी क़यादत बार बार ये स्टेटमेंट दे रही थी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसके प्लेटफॉर्म से एहतजाज होगा, महमूद खान साहब इसको लीड करेंगे। हमारे शो पे उन्होंने डिनाई किया, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है और हम तो एक मॉरल सपोर्ट के लिए करेंगे। तो एक जो इतनी बड़ी पार्टी है, बजाय इसके कि वो दूसरी पार्टीज के पीछे छुपे या उनके साथ या उनको लीड करने का कहे, उनको लीड खुद करना चाहिए था इसमें। तो मेरे ख्याल से जो एक प्लानिंग होनी चाहिए, अगर आपने कोई जलसा करना है और आप दावा कर रहे हैं कि बड़ा एहतजाज होगा, वो प्लानिंग जो है वो मिसिंग थी। और इसके अलावा इस वक्त जो क्यादत भी है वो कोई बहुत ज्यादा सियासी तौर पे बहुत मेच्योर लोग नहीं है या एक्सपीरियंस लोग नहीं है जो कि मेरे ख्याल से एक पुल ऑफ कर सकते हैं। तो उस लिहाज से तो ये परफॉर्मेंस जो है पीटीआई की मायूस कुन रही है। लेकिन मैं एक अलीना इस पर बात करना चाहूंगा, मुझे ये पूरी जो हिकमत अमली इस वक्त हुकूमत की है, फ्रैंकली वो समझ नहीं आ रही है। क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 महीने से देखें, जब से ये खासतौर पर पाकिस्तान इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो एक बैक साइड उसने ले ली थी। यानी कि इमरान खान साहब के ट्विटर पर बयान आते थे, लेकिन इवन ऑन मीडिया, मेरे शो पे मिसाल के तौर पे पिछले 3-4 महीने में 70-80% कंटेंट जो है वो फॉरेन अफेयर्स रिलेटेड था, जंग रिलेटेड था, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट था या गजा का कॉन्फ्लिक्ट था। मतलब ये इश्यूज हम ज्यादातर डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब हुकूमत ने एक अपॉर्चुनिटी दी है तहरीक इंसाफ को दोबारा अपनी एक्टिविटी करने की। एक तो एहतजाज उन्होंने खुद ऐलान किया, लेकिन दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि जो 9 मई के ट्रायल हो रहे हैं और उसमें लोगों को सजाएं हो रही है और फौरी तौर पे ईसीपी उनको डी नोटिफाई कर रहा है और ईसीपी इलेक्शन का भी ऐलान कर रहा है, बाय इलेक्शंस का। तो ये तहरीक इंसाफ को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करें। मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है वो इस पर गौर कर रहे हैं कि बाइकआउट कर दें इलेक्शंस का, लेकिन अगर सियासी तौर पर देखा जाए किसी भी इलेक्शन का बाइकआउट करने का फायदा नहीं होता। उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे बेशक वो कहीं फॉर्म 47 वाले जीत जाएंगे, लेकिन आप जलसे करें, जुलूस करें, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अपनी स्पेस गेन करने की कोशिश करें। हुकूमत का मुझे स्ट्रैटेजी इसलिए नहीं समझ आ रही, इस वक्त उनकी 2/3 अक्सरियत दोनों ऐवानों में है। अदलिया से इस सेटअप को कोई खतरा नहीं है। 26वीं तरमीम बल्कि अब शायद 27वीं तरमीम की बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप से कोई खतरा नहीं है।
तो जब आप ये कह रहे थे कि अब हमने अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई कर लिया है और सारी अब हमारी जो है तवज्जो परफॉर्मेंस पे होगी, इकोनॉमी पे होगी, गवर्नेंस पे होगी, तो फिर उसी पे रखते हैं आप तवज्जो। लेकिन अब ये वापस हुकूमत पीटीआई की जो एक्टिविटी जनरेट करवाएगी, मुझे नहीं लगता इसमें उनका कैसे फायदा है। पीटीआई को शायद इससे कोई हुकूमत ना मिल जाए या इमरान खान रिहा ना हो जाए, लेकिन एटलीस्ट उनको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। एंड आई डोंट नो हाउ दैट सूट्स गवर्नमेंट। तो मुझे नहीं पता इतनी सीटों के बावजूद मजीद चंद सीटें अगर पीटीआई लूज कर जाए या ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत है वो गेन कर जाए, उससे जो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी सिवाय इसके कि पीटीआई को एक मौका मिलेगा। सोहेल वराद साहब, आप इसका किस तरह तज्जिया करते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खासकर कल जो पूरी एपिसोड हुई, इवन रुकावटों वाली भी, उसको कुछ हासिल हुआ? क्योंकि जब ये फैसला किया गया था, हम यहाँ पर बल्कि बहुत सारे लोग ये तज्जिया तबसरा कर रहे थे कि इस माहौल में, इन सर्कमस्टांसिस के अंदर, जब क़यादत के पास उस तरह इख्तियार भी नहीं है, जेल से खुद लीड करने का कह रहे हैं खान साहब, तो दुरुस्त है या नहीं है फैसला, इसके ऊपर अभी ज्यूरी आउट है। कल को देखने के बाद आपकी क्या राय है? देखिए, एक तो इस जो 5 अगस्त का था एहतजाज, इसमें कुछ पीटीआई के लिए कुछ पॉजिटिव मैसेजेस हैं, कुछ नेगेटिव मैसेजेस। पॉजिटिव मैसेज तो ये है कि लोग शख्सी तौर पर मुझे कई जगह पे लोग निकले हुए नजर आए। ये पहली दफा हुआ इलेक्शन के बाद, ये पहली एक पीटीआई के लिए मुस्बत चीज है कि नीचे तक लोग जाती तौर पर कई जगह निकले हैं और हर जगह तकरीबन जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं या जो लोग पॉलिटिकल एक्टिव हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसमें जो बहुत बड़ी कमजोरी नजर आई वो ऑर्गेनाइजेशनल है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो ये बताए कि भाई कहाँ पे जलसा होगा, क्या कोऑर्डिनेशन होगी, कोई रास्ता है, किस तरह से इकट्ठे होना है, किस तरह से। तो वो एक टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड जो है वो फोर्स के तौर पे सामने आई। और इसीलिए मैं काफी अरसे से कह रहा हूं कि जो उनके पास स्ट्रीट पावर है वो पीटीआई के पास नहीं रही। स्ट्रीट पावर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन से ही रहती है। आप इंडिविजुअल अगर कोई एफर्ट कर भी लें तो उसका कोई फायदा नहीं होता जब तक आप एक बहुत ऑर्गेनाइज शो ना करें। और उसके लिए हमेशा ऑर्गेनाइजेशन रोल अदा करती है, चाहे वो खुफिया तौर पे पीछे हो या जाहिरी तौर पर पीछे हो। तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब के अंदर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई सेंट्रल लेवल पे कोई ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। को पता ही नहीं है कि राब्ता भी किसी का कारकुनों के साथ है या नहीं है। तो वोट बैंक तो डेफिनेटली कोई हमारे पास ऐसा पैमाना नहीं है जो ये बताए कि कोई पीटीआई का वोट बैंक कम हो गया है। मेरा ख्याल है उसी तरह है मौजूद, क्योंकि कोई सियासी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं। लेकिन डेफिनेटली उनकी जो स्ट्रीट पावर है वो और कम होती जा रही है और उसकी वजह डेफिनेटली जिस तरह शहजाद साहब ने कहा, खौफ भी है, हुकूमत का दबाव भी है, मायूसी भी होती है। फिर सबसे बड़ी